Hello friends, today we will discuss about in medicinal chemistry uh, fifth same unit fifth. First of all we will discuss about insulin. All of about familiar to insulin used in diabetes mellitus. Insulin first obtained from insulin secrete from pancreatic cells or pancreatic hormone. Cells of Langerhans of dog first time isolate pancreatic hormone में three types of cell: alpha cell, beta cells and delta cells. Beta cell secrete proteinaceous hormone that is insulin. In insulin contain two chain, that is chain A and chain B. Chain A contain 21 amino acid and chain B contain 30 amino acid. Chain A called shorter chain and chain B also called longer chain. Both chain A and B join together by disulfide bond. When chain break, then pancreatic activity reduces. बायोसिंथेसिस की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि इंसुलिन आपका नेचुरल सब्सटेंस बायोसिंथेसाइज इन ह्यूमन बीइंग, इसलिए केमिकल सिंथेसिस की बात नहीं होगी यहाँ पे इंसुलिन के केस में। बायोसिंथेसिस, इंसुलिन फर्स्ट रिलीज फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्री हार्मोन ऑफ pancreatic. Beta cells contain 110 amino acid, undergo or translocate into rough endoplasmic reticulum. Then cleavage occurs. 24 amino acid from n terminal of B chain that form pro-insulin. After that undergo into Golgi complex. In Golgi complex, additional modification carried out. These modification catalyzed by calcium ion dependent endopeptidase occurs proteolysis. 4 basic amino acid, that amino acid character in basic, 4 basic amino acid and C peptide remove out, finally form insulin. Insulin occur in following form, that is monomeric, dimeric, hexameric, stored in pancreatic cell. Zinc is responsible for stability of insulin. अगर हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसुलिन नॉर्मली विदाउट सिक्रीशन कंटेन 3 chain. First A chain 21 amino acid and then B chain contain 30 amino acid. Both A and B join together by disulfide bond, and both A and B chain in between connecting by C peptide, also called collecting peptide, 31 amino acid. मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन. अगर मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन की बात करें तो ओवरऑल हाइपोग्लाइसेमिक. इंसुलिन एक्ट बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर विच आर हेट्रोटेट्रामेरिक ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हेट्रोटेट्रामेरिक फॉर्म है इंसुलिन का, तो हैव टू चेन, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट. अल्फा सब यूनिट कंटेन इंसुलिन बाइंडिंग साइट, bind with insulin, whereas beta subunit while carrying tyrosine protein kinase activity, it causes phosphorylation and dephosphorylation. That result chemical events result in stimulation or inhibition of enzyme involved in rapid metabolic action of insulin, and secrete insulin act on liver, muscles and adipose tissue. Insulin first of all discuss act on liver. In liver, increase glucose uptake and glycogen synthesis, increases inhibit glycogenolysis, prevent glucose breakdown, inhibit gluconeogenesis from protein free fatty acid and glycerol. In case of muscles, increase glucose uptake and utilization, inhibit proteolysis, release of amino acid which act as substrate for gluconeogenesis in liver.
एडिपोज टिश्यू इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, स्टोर एज ए फैट एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इनहिबिट लिपोलिसिस एंड रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।